doing the same exact job. If you look up the salaries of chief executives of big firms, you'll find that the male chief executives tend to have higher salaries than chief executives that are female or that belong to some sort of a minority race group, right? So the idea is कि सबको equivalent compensation देनी चाहिए. पाकिस्तान में इस तरह का कोई लॉ नहीं है. So if we are equivalently qualified, आप मेल हैं, आपको मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूँ और कोई और फीमेल है तो उसको मैं थोड़ी पेमेंट कर सकता हूँ. So ये मेरी मर्जी है. पाकिस्तान में ऐसे कोई लॉ नहीं है जो कि इंश्योर करेगा कि सबको इक्विवेलेंट पैसे दिए जाए. लेकिन यूएस वगैरह में और इस तरह के डेवलप नेशंस में इस तरह के लॉज बन रहे हैं. इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं, but laws are being made to ensure that people get paid the same amount of money. सर अगर मल्टीनेशनल कंपनी है कोई पाकिस्तान में तो वो हमारे लॉ फॉलो करेगी या जहाँ की है वहाँ के लॉ फॉलो करेगी? ज्यादातर ये मल्टीनेशनल जो है जरा इंसान के बच्चे होते हैं. नॉर्मली ये जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज के, इन्हीं में आपको ज्यादा इश्यूज मिलेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मल्टीनेशनल जो है वो इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जितना कि आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करता है. 80% आपकी मईशत जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू चलती है, राइट? So 80% of your workforce is also engaged in small and medium enterprises. उधर आपको ये इक्वालिटी और इस तरह की चीज़ों का मिलना, इक्वल कॉम्पनसेशन, हायरिंग के टाइम पे इक्वालिटी का मिलना, ये चीज़ें आपको बड़ा मुश्किल है. हाँ जी सर, ये कंपनसेशन की बात आपने की, ये मेल्स को ज्यादा आपने कहा दिया जाता है और फीमेल्स को कम दिया जाता है, ये क्यों? क्योंकि ये हमारे वो है ना माइंडसेट है ना. मर्द ताकतवर होता है, मर्द जो है वो लंबा होता है साइज में, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं सर. हैंडसम है, वो जाके लोगों से मिलता है, डोमिनेटिंग है, लीडरशिप का रोल प्ले करता है. खवातीन को आप देखें वो तो दबी दबी सी, सहमी सहमी सी, ये तो हमारे ख्यालात है ना. तो इनकी वजह से हम क्या करते हैं कि खवातीन को हम कम पैसे देते हैं, मर्दों को ज्यादा देते हैं. यस सर. आप देखें लेडी पुलिस को ले ले वर्सेस मेल पुलिस को ले ले. सर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता? जी सर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में फिर नहीं आता? हमें तो फिर चाहिए. आता है ना, ये तो प्रॉब्लम है ना. डेफिनेटली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक को ज्यादा पे कर रहे हैं, दूसरे को कम. यस सर. ओके. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लोग जब जॉब कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को जब इवैल्यूएट किया जाता है उसमें इट टर्न्स आउट के मेल्स को और मेजॉरिटी जो एथनिक ग्रुप के मेंबरान होते हैं दे आर इवैल्यूएटेड मोर पॉजिटिवली एंड लेस क्रिटिकली as compared to people belonging to minority groups. ठीक है, तो उधर भी थोड़े से मसले बनते हैं. और फिर लास्टली कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज में जहां पे आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं वहां पे भी डाइवर्सिटी आ जाती है, which is quite strange. Can you think of any example where we treat customers differently according to their skin color? Yeah, exactly. So if you look like you belong to a majority group and you're dressed very well and you go to a car showroom, you will be dealt with differently as compared to if you belong to a minority group and you're dressed shabbily and you go to the same car dealership, you will be dealt with differently. Sir, what heading does this come under? This is just this idea of managing diversity. कि diversity exist कर रही है तो हमारा at least 3 areas का focus है hiring के time पे. जब employee हमारे पास आ जाता है, हमारा employee बन जाता है, तो तीसरा focus बनेगा customer. Yes sir. सर जी सर, जैसे आपने बताया कि customer service can also vary according to diversity. So the amount of wealth that a person has, like a rich person against a poor person, is that diversity or a demographic? टारगेट मार्केटिंग जो होती है, टारगेट मार्केटिंग हम सेक्टर को जो एडवर्क करते हैं सर.
ये देखें, इस पर बाद में मैं एक एग्जांपल डाली हुई है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये 20 लोग नहीं होते, मोटे लोग, हाँ, इनको देखा गया है ना, साइंस ये बताती है कि जब ये मोटे लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वेटर्स इनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं एज कंपेयर टू पीपल जिनका नॉर्मल वेट होता सर वेल्थ पैसे है। तो कैसे ट्रीट करते हो पैसों उनके की सर? मैंने सुन लिया था, पैसे तो डेमोग्राफिक है ना, बस आप या वेल्थ है या पुअर है, आप एक सर कैटेगरी में या दूसरी। नहीं सर, लेकिन टारगेट मार्केटिंग जो हम करते हैं, सेक्टर में डिवाइड करते हैं मार्केट को, तब सर ये वो तो चीज में नहीं डाइवर्सिटी तो ना हुई ना यार, ये तो डाइवर्सिटी ना हुई। ओके। ये तो आप वो कर रहे हैं ना, अपने प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं ताकि आप उसके ऊपर बेच सकें। सही। सर अभी जो आपने कहा है कि 10 मोटे लोगों को अलग से ट्रीट कर रहे थे, हाँ। तो वो कैसे कैसे मतलब? ये देखें ना आप एक नेचुरल हुआ है ना, एक ऐसा इंसान जो कि आपकी तरह ज्यादा लगता है ना, तो उसकी तरफ आप नॉर्मल बिहेव करोगे। कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे थोड़ा सा हटके है, आपसे मुनफरद है, उसके साथ आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग सी हो जाती है। एज एन एग्जांपल, हम सारे आपस में उठते बैठते हैं ना, बिल्कुल हम तो आपस में एक नॉर्मल सा बिहेव करते हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर। ठीक है। अब आपकी क्लास में हम एक अंग्रेज ला के बैठा दें, तो उसके साथ आपका बिहेवियर वैसे ही होगा जैसा आपका बाकी क्लास फेलोज के साथ है, Yes. No. right? Probably. Start में many people would have these question marks in their head and they would be trying to figure out कि यार boundaries क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता, क्या बता सकता हूँ, क्या नहीं बता सकता, etc. और वो भी इसी तरह सोच रहा होगा। Eventually जब वो breaking the ice type की चीज हो जाएगी ना, things will then get normalized with time, लेकिन वो differences फिर भी बीच में रहेंगे। Right? So, Sir, a what is natural the phenomenon that people look at other people in a particular way and they make these preconceptions about them, and then their behavior just sort of voluntarily or involuntarily changes and they behave strangely and differently. okay? ठीक है, सो करना ऐसे है कि कस्टमर्स को हमने वो नहीं करना ना, डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना है, सारे कस्टमर्स को इक्विवेलेंटली हमें ट्रीट करना है। खपके वैना करना, टोला पैसा अलता ना। Okay. So valuing diversity, right? This idea of managing diversity and valuing it happens in the form of ensuring कि job applicants के साथ हम ज्यादती ना करें, employees के साथ हम अच्छे तरीके से behave करें और ज्यादती ना करें, और अपने customers के साथ भी एक particular तरीके से, right? तो मैंने यहाँ पे एक example डाली हुई है नेस्ले पाकिस्तान की, inclusion, diversity or inclusion के हवाले से. So I would greatly suggest that when you guys get some free time to click on this link of Nestle and have a look at how this big transnational company is trying to ensure diversity at its work. अच्छा, अब inclusion क्या है? Inclusion ये है कि हम कितने हद तक अपने employees को accept कर लेते हैं, उनके differences को, और उनके साथ हम किस हद तक fair treatment करते हैं. That is the idea of inclusion. So certain businesses are more inclusive as compared to certain other types of business, right? So could you define that again, please? Okay, inclusion means to what degree or to what extent do we accept and treat people fairly, right? I'll give you an example. There are certain businesses where you'll find that they do have some female employees, but we find that those businesses seldom offer any managerial level or higher management cadre opportunities towards these females. So we will find that those businesses are inclusive, Non-inclusive. but to a lesser degree. And then we may find the other businesses, they provide many more opportunities to females, and they allow them to go higher up in those organizations. So we will say that those type of businesses are more inclusive. Yes, sir. ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है. कैन यू सी दिस टेबल इन वन नोट?
Yes, sir. होनी चाहिए. इंडस्ट्री है, एंट्री लेवल, मैनेजर लेवल, डिपार्टमेंट हेड, सी सूट लेवल, right? So look at the automotive industry, right? 35% of their employees are female at the entry level. 40% of their employees are female at the managerial level. 5% of their employees are female at the departmental level, and then in the corporate level, C-suite level, this upper level management, 0%. Look at the pharma sector, 20% entry level, 4 to 9% managerial level, 1 to 6% at the departmental level, and 0% at the corporate suite level. Banking, 8 to 80% is entry level. Managerial level is 0.8 to 40%, and then 0 to 11% at the corporate suite level. So if you look at this table, it's interesting to find कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि वो नहीं अट्रैक्ट कर रहे. Look at engineering products. 0%. हाँ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में क्या चीजें बनती है? मशीनरी. ये वो बनाएगा ना, पानी के पंप बनाएगा. हाँ, ये वेल्डिंग की मोटर वो बनाएगा, वेल्डिंग वाली चीजें बना के देगा, ट्रांसफार्मर बना के देगा. ऐसा कि वो गंदे गंदी चीजें नहीं होती जो किसी को नहीं चाहिए होते. खतरनाक चीजें. हाँ, बेसिकली वहाँ पे फीमेल क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइप की पोजीशन में फीमेल क्या करेगी? सर दे कांट हैंडल इट. हाँ सर, वो एनवायरनमेंट में जाके जॉब करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा. एग्जैक्टली. Because you'll be dealing with highly illiterate type of workers, and it will be a very dirty, filthy work environment. Plus, you'll find कि इस तरह के जो sectors हैं या आपके बड़े-बड़े जो cities हैं उसमें नहीं मिलेगी आपको. ये बड़ी cities से बाहर करके ना, गुजरावाला, गुजरात, इस तरह के जो localities हैं, जो industrial hubs हैं, उस तरह की cities में आपको मिलेगी. तो वहाँ पे वो सहूलियात जिंदगी और वो सारी चीजें हैं ही नहीं. You find that many females are not sort of willing. सर, excuse me sir. हाँ जी. सर ये तो इन फीमेल्स का अपना वो खुद का वो है ना इंटरेस्ट है कि ये मतलब इन फील्ड में नहीं जा. हाँ, खुद का भी इंटरेस्ट है, लेकिन इन कंपनीज का भी तो कुछ काम होगा ना बेटा. ये भी तो कोई ड्राइव या इनिशिएटिव करे ना, ताकि फॉर एग्जांपल ये डिजाइनिंग हुआ और मतलब ये यहाँ बहुत से ऐसे फील्ड्स है उसमें मेल्स की वो बहुत कम है. वहाँ पर तो फिर ये परसेंटेज वहाँ पर मेल्स की कम होगी और यहाँ पर फीमेल्स की. ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करे ना, वो क्यों नहीं अट्रैक्ट करे? देखिए, ये तो नेचुरल सा है ना. ये जो हो रहा है ना आपके सामने इस टेबल में, ये तो नेचुरल है. ये तो किसी ने कॉज नहीं किया ना, ये तो बस इस तरह है. तो अब इसको बदला जा सकता है क्या? फीमेल्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है क्या? आओ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की फील्ड में आओ, केमिकल सेक्टर में आओ, सीमेंट के सेक्टर में आओ. सो दिस इज द थॉट, राइट? द थॉट इज किसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को देखें और ये कहें कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और सोसाइटी का मेकअप किस तरह का है. सो देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी टू हायर पीपल फ्रॉम another type of ethnicity or another type of identity. Okay? अच्छा, corporate suite level पे आप याद रखें, those companies that are listed on the Pakistan stock market, उनके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं कि they must have a certain percentage of female on their board of governors. ठीक है? तो corporate suite level पे there are certain regulations existing where the government is saying that you must have some percentage level of female representation on your board of governors, right? At least one है या two females होनी चाहिए as members of your BOG. अब इसमें यह हो जाता है कि उन फीमेल्स को नॉर्मली डाल दिया जाता है BOG में जो कि फॉर एग्जांपल कोई किसी और कंपनी के प्रेसिडेंट की बीवी है तो उसको BOG का मेंबर बना दिया गया है. वो कभी आती है या कभी नहीं आती, वो अलग बात है, लेकिन कागज में उसका नाम लिख दिया
जाता है कि वो BOG की मेंबर हो। ये इस तरह के गाने भी एक आ जाते हैं। अच्छा, now types of diversity देखते हैं। There's 3 types of diversity. I've gone back towards the top और Nestle की जो example थी उसके below. Types of diversity, right? Number 1 is surface level diversity. Surface level diversity is basically diversity that you can see. Diversity in the sense कि skin color है वो आप देख सकते हैं। किसी कोई बंदा है वो व्हील चेयर के ऊपर है या आपको नजर आता है। कोई खातून है, she is dressed up like a woman, you can see that, right? So this is called surface level diversity. This is diversity that is visible to us. It is apparent. That's one level of diversity, or one type of diversity. Then we've got a deeper level diversity as well. Deeper level diversity is something that's not visible on the surface, but rather something that is a little bit hidden, right? You have to sort of either display it or you have to sort of exhibit it in some way. For example, your belief structure, right? So there may be some people, you know, on the street, you can look at them and you don't know what particular belief structure they belong to. लेकिन फिर आप देखते हैं कि नमाज के टाइम पे वो खड़े हो गए और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर लिया, then we can say कि अच्छा ये लोग अब क्या है, ये मुसलमान है, right? So this is a deep level diversity, something that's sort of non-observable until a particular instance happens or a particular event happens where it is exhibited. And then the third level of diversity is called the hidden diversity. And these are characteristics that are deep down inside you, and you may have expressed them to somebody. So then if you have expressed them, they're not hidden diversity anymore. But if you have not expressed them and you have kept them hidden, then therefore they are known as hidden diversity. Okay? So surface diversity apparent hai, nazar aati hai. Deeper diversity is there in you, but certain events or some things would happen where you would exhibit them to फिर हमें नजर आ जाएगी वरना हमें पता नहीं लगेगा. And hidden diversity is diversity that you normally do not display. For example, there may be people who are attracted to the same gender. तो वो नहीं बताना चाह रहे किसी को. If they're not showcasing their sexual orientation, then we say that that's a hidden level of diversity. ठीक है? Okay. तो फिर मैंने एक लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, which is from the Canadian government's website, और आप इसको चेक कर सकते हैं how others see you, and it's quite interesting. It is the Canadian perspective on how the Canadians view Pakistani. Okay? So I found it quite interesting and quite funny when I was reading it. So I would recommend कि आप इसको थोड़ा सा फिर check out कर ले. But you know, people from another country are thinking about us in a very peculiar type of a manner. और अपने बारे में पढ़ने से इंसान को थोड़ा सा पता लगता है कि हम कितने अजीब से लोग हैं. सर ये लिंक है? ये लिंक है How Others See You. आपको नजर आ रहा है? जी सर. Types of Diversity के नीचे पड़ा हुआ है. अच्छा, फिर उसके नीचे एक और लिंक है. डॉक्टर जवाद सैयद, ये लम्स के जो दाऊद स्कूल है उसका डीन था कुछ अर्से पहले तक. तो ये सैयद जवाद के साथ कोई इंटरव्यू हुआ था डाइवर्सिटी के बारे में. बड़ा शॉर्ट सा इंटरव्यू है, तो इसको भी देख लें. इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम्स वो हाईलाइट कर रहा है और वही बातें जो हमने अभी तक की है ना कि और ख़वातीन एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे जॉब फोर्सेस में वगैरह वगैरह. सो द सेम टाइप ऑफ इश्यूज आर बीइंग स्पोकन देयर एज वेल, राइट? सो इसको भी फिर आप चेक आउट करें. अच्छा, फिर ये देखें हाउ डाइवर्स इज द वर्कफोर्स, राइट? अब इसके सामने लिखा है कि इट्स अ स्लोली चेंजिंग वर्कफोर्स. इट्स नॉट हैपनिंग वेरी रैपिडली. In 1992, the Pakistani workforce was 82% male. In 2018,
the Pakistani workforce is 86.46% male. In 1992, 13.3% of the workforce was female, and in 2018, 13.54% of the population is the workforce is female. So we have not Female improved. right? आप clearly देख सकते हैं कि females are still not participating very much in सर 40 नहीं है ना सर जी सर आई गेस वो अप्लाइज नहीं कर रही होती उस टाइम और मुझे क्या पता है ये तो इनसे पूछना पड़ेगा अब ये देखें केपी के फिगर्स देखें अच्छा केपी इज 88.5% male 11.4% of the workforce is female. Punjab has 83.64% males working in the workforce and 16.36% are female. So Punjab has a bit better diversity as compared to the rest of Pakistan. Sindh mein 90.68% of the workforce is male, 9.32% is female. अब coincidentally मुझे उसका कराची का डेटा नहीं मिला but I really wanted to see Karachi's data because Sindh predominantly है वो वडेरे type का environment so Karachi is this anomaly that exists there so I just wanted to see कि कराची के क्या हालात थे but the Pakistan Bureau of Statistics only provided this result so that is what I got for you and then Balochistan ने तो सबसे ही जान शर्माई हुई है is 91.28% male and 8.72% female. Right? So there's still tremendously large potential. अब ये भी आप याद रखें 49% of the population of Pakistan is male, 51% of the population of Pakistan is female. Wow. सर वही ना सर अप्लाइज नहीं करती सेफ्टी नहीं है वगैरह वगैरह हाँ ना ज्यादातर यही है और काम नहीं करती देखें आप बिल्कुल सर एग्रीड फातिमा सर आई हैव आंसर्स फॉर दिस मगर क्लास में बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने शुरू किया तो बस क्लास में हलचल मच जाएगी कल आप फिर बताएंगे नहीं सर यूनिक खुल जाए फिर बता दूंगी गूगल क्लास में नहीं बताया तो बस लगता है परपेचुअली बंद है कभी एक फॉरवर्ड हो जाएगा कभी हाँ ये बात तो है वैक्सीन निकल गई है वैसे कोई बात नहीं सर हमें पहुंच जाएगी कुछ महीनों में Pero ko siya wala developed countries la working na pas de mga lara kay kana. आओ कानून अभी जोड़ कर जाएंगे बड़े इस्तेमाल है अच्छा तो ये वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे टैग कर दी है यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी द वर्ल्ड बैंक के क्या थॉट्स हैं कि फीमेल लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन कैसे जा रही है पाकिस्तान में अच्छा नाउ देयर सर्टेन इश्यूज दैट sort of are particularly unique to the female workforce, right? और अब मैं female workforce के ऊपर इसलिए focus कर रहा हूँ क्योंकि ये एक पाकिस्तानी phenomena है. पाकिस्तान में, as I have argued so far, very few females are coming towards employment. They are isolated industries or sectors where we find a lot more females, but generally there's a significantly reduced type of participation from the females. So what kind of problems do exist for these women that have joined the workforce, right? So one problem that faces the female workforce is the idea of the glass ceiling, right? Glass ceiling ऐसे है कि आप अपने ऊपर देखें ना तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं hopefully बाहर नहीं बैठे हुए there must be a ceiling above you. Imagine that this was made from glass. So you would be able to see above it. You would be able to see all the way up, right? So the idea is कि females को कहा जाता है कि आपके पास ample opportunities हैं, आपको equality और equity मिलेगी हमारी organization में,
and you can become anything. You can go to the highest level, right? But what happens is that there's this glass ceiling. It prevents women from moving beyond a certain level in a organization. This is called the glass ceiling effect, and the glass ceiling exists for females, and there are also glass ceilings that exist for other minority groups as well. ठीक है, so जैसे हमें कहते हैं ना कि तालीम करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा. So is that really the case for everybody? No, sir. No, sir. तो उनको सब No, मिलेगा? sir. There is a tremendous amount of glass ceiling that exists, but this is normally a word that we sort of reserve for the female workforce, right? Then we've got this idea of sexual harassment, and this is something that can happen both to the females and it can also happen to the males, but science says that predominantly it happens from a male towards, or it's directed towards the female. So females sort of experience more sexual harassment at the workplace, right? The Equal Employment Opportunity Commission of the US defines sexual harassment as unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical harassment of a sexual nature. Harassment could also include offensive remarks about a person's sex, right? So this makes the idea of sexual harassment. And I would like to say that there are two forms that sort of this happens in. Sexual harassment takes two shapes. One is called the quid pro quo. Quid pro quo का मतलब ये होता है कि कैसे कह सकते हैं, give and take वाला कोई माहौल है. I'll give you something, so you'll give me back something in return, right? So quid pro quo type of sexual harassment refers to the exchange of rewards for sexual favors or punishment for refusal to grant sexual favors, right? So या तो reward मिलेगा या कोई punishment मिलेगी अगर वो female participate नहीं करेगी. So that type of a sexual harassment is called the quid pro quo. The other is where the male creates a hostile sort of environment where the female feels abused and she doesn't want to sort of, she doesn't feel comfortable coming to work anymore, right? So that would be another form of sexual harassment. So जैसे मैंने आपको कहा, it can go in both ways. Females could end up harassing males, males could harass females, males can actually harass males as well, and females could harass females as well. But science says that mostly when we say sexual harassment, we see most incidences of it happening in the form where males are harassing the females. Now in Pakistan, there are some laws about harassment. तो ये मैंने लिंक आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है. एंटी हरासमेंट लॉज इन पाकिस्तान के हवाले से. पाकिस्तान में if you harass somebody, I believe it's 5 लाख रुपए का जुर्माना and 3 साल की जेल. Sir, on what level does that depend? ये लिंक आप खोलिएगा. पाकिस्तान इज अ वेरी फनी कंट्री. अगर आप सड़क पे गाने गाते हुए भी गुजर गए ना तो उसमें भी आपको जेल हो सकती है. But sir, does it depend on your rank? Like, what if, for example, you're like a 10, 15-year-old girl? How can you sue someone for harassment at that age? You don't have a specific standard or level position in your society. ये आप इसको उसके साथ मत टू चेंज करें कि नॉर्मल सोसाइटी में क्या हो रहा है. हम इसको देखेंगे as far as the workforce is concerned. So the workforce from a business perspective is people are going to be mature, 18 years of age and higher, right? So people who are 18 years old would be members of your organization, and if these people get harassed, they have recourse and they can go to the law and to the courts and they can file. सर आप ये याद रखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ. ये याद रखें कि बहुत से लोग हरास होते जाएंगे लेकिन वो बोलेंगे कुछ भी नहीं. रीजन बीइंग सोशल स्टिग्मा. आपका जो कल्चर है ना,
वो क्या कहता है? आपका कल्चर ये कहता है कि if somebody stands up and says that I got harassed at the workforce, वो अपनी बदनामी नहीं करना चाह रहा ना, तो इसलिए वो उसको परसू भी नहीं करेगा. So we find many instances where females are experiencing the quid pro quo type of harassment, or they are experiencing a hostile environment type of harassment, but they don't say anything because the moment they speak up, they find कि उनकी अपनी जो सोसाइटी की स्टैंडिंग है या सोसाइटी में जो उनका एक वो है इज्जत है वो पामाल हो सकती है. So many instances of this go unreported. ओके जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? कौन था? कोई था? Ahmed, you wanted to say something? Yeah, It was sir, I wanted to say something, but I totally forgot. You forgot it? Yeah. चलिए, जब याद आ जाए फिर आप बता. जी बिल्कुल सर. Okay, so here's a question then. If employees are penalized, for example, by being demoted or transferred to another department for refusing to respond to repeated sexual advances, आपके ख्याल से ये quid pro quo है कि ये है harassment of the type that creates a hostile environment? Harassment. Sir, That this creates is a a hostile quid environment. quid pro quo. Yes, sir. The first one. Okay, it's the first one. ठीक है, क्योंकि या तो आप उनको कुछ बेनिफिट दोगे और या क्विड प्रो क्वो में आप कोई पनिशमेंट देंगे. तो आप डिमोट कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ harassment of the type of quid pro quo. But isn't this creating an abusive work climate? वो नहीं, ये बिकॉज इसमें कुछ लेन देन का काम है, गिव एंड टेक. So like casting couch and things. जी, Like you said that the give and take topic. Wait, I'm just लेकिन गिव एंड टेक ऐसे है कि कोई बॉस फॉर एग्जांपल अपनी किसी सबऑर्डिनेट को कोई सेक्सुअल एडवांसेस करता है और उसको कहता है कि इफ यू रेसिप्रोकेट, आप पार्टिसिपेट करें, आई गिव यू अ हायर मैनेजरियल लेवल, आई गिव यू अ हायर सैलरी एटसेट्रा, राइट? तो इफ दैट डजंट हैपन, तो उसको फिर उसकी प्रमोशंस को रोकता है, उसके सिलेक्शन बोर्ड्स में वो मसले करना शुरू कर देता है, व्हाटएवर द एनवायरनमेंट इज लाइक. तो दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ द क्विड प्रो क्वो. अब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इसके साथ बन सकती है. हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगी ना कि कोई इस तरह की हरासमेंट जिसमें क्विड प्रो क्वो नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल अ बॉस कुड डू अ क्विड प्रो क्वो, राइट? लेकिन आपके पीयर्स तो आपके साथ क्विड प्रो क्वो नहीं कर सकते. आपका पीयर तो आपको कुछ तरक्की नहीं दे सकता, ना ही आपका पीयर आपको डिमोट कर सकता है. तो आपका पीयर क्या कर सकता है? आपका पीयर यही है कि आपको छेड़ता रहे. You come to the work and they're passing lewd comments to you, and they're looking at you and saying strange things, or उनका बड़ा odd सा behavior है. So in that case, as a person, you don't feel comfortable in that environment, right? So the quid pro quo would normally happen when there is somebody in power doing it. The peer-to-peer type of harassment would normally create a hostile environment. Okay. Okay. पहले हमारे पास आइडिया रेस और एथनिसिटी का है. रेस क्या है? रेस इस तरह की चीज है कि ये हमने एक कैटेगरी बना ली है. बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर फिजिकल traits that we have. For example, we may have oriental looking eyes, तो हम कहते हैं कि ये orientals हैं. We may have curly hair and black skin, तो फिर हम कहते हैं कि ये blacks हैं. We may have short stature and we may have broad chest, so in that case हम कह सकते हैं कि ये नेपाली हैं या ये Peruvians हैं या whatever, right? So इस तरह की हम categories बना सकते हैं of races, and we can say that there's a race of people, right? दूसरा हमारे पास है ethnicity, और ethnicity, as I argued to you, is something that we have created
बेस्ड अपॉन दिस आइडिया कि हमारे कॉमन लैंग्वेज हो गई या कॉमन कपड़े हो गए, हमारे कॉमन म्यूजिक हो गया, कॉमन कल्चर हो गया, दैट इज आवर एथनिक आइडेंटिफिकेशन, राइट। रेस और एथनिसिटी डिफरेंट चीजें हैं। रेस आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, एथनिसिटी आपकी बिलोंगिंगनेस की वजह से है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी एथनिसिटी को चेंज कर सकते हैं, क्या आप अपने रेस को चेंज कर सकते हैं? नो सर, रेस तो Maybe yes. जात जो होती है लोगों की वो नहीं बदल सकती। देखिए, बदल सकते it would be difficult for certain race groups to change their race. For example, it would be very difficult for a black person to change their race and say कि अब मैं black नहीं रहा, I have become a white person. माइकल जैक्सन। Yeah, Michael Jackson was a good example of somebody who attempted to change their race from Yeah. black to white. But that doesn't that's not a very common occurrence. यस। लेकिन कुछ रेसेस ऐसी हैं जैसे हिस्पैनिक्स हो गए, ये स्पेनिश स्पीकिंग लोग हो गए ना, मेक्सिको वाले स्पेसिफिकली, जो कि आके अमेरिका में आबाद हो गए। सो दीज पीपल आर नोन एज द हिस्पैनिक्स। अब इसमें मेक्सिकन्स भी हैं, हिस्पैनिक्स में क्यूबन्स भी आ जाएंगे, पोर्टुगीज भी आ जाएंगे, इसके अलावा ये और भी ये स्पेनिश स्पीकिंग जो साउथ अमेरिका के लोग हैं, ये सारे हिस्पैनिक्स कैटेगरी में आते हैं। बट सर ये रेस और एथनिसिटी का फर्क जरा रिपीट करें सर। अच्छा, रेस आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, एथनिसिटी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं है। फॉर एग्जांपल आप हमें देखें ना और आप हमारे अगेंस्ट उसको देख लें, फॉर एग्जांपल किसको देख लें, दुबई के लोगों को देख लें, या हमारे लोग और दुबई के लोगों के लुक्स में कोई बहुत बड़ा फर्क है? नो सर। ना सिवाय इसके कि वो अजीब सी मूछें रख के फिर रहे होते हैं, तो उनके वो जो फेशियल हेयर्स हैं उसके अलावा तो हमारे और उनके लुक्स में इतना कोई फर्क नहीं है ना। एथनिसिटी में फर्क है। Yes, sir. Languages are different. The way that we live. उनका ड्रेसिंग डिफरेंट है, उनके गाने डिफरेंट है, उनका फूड डिफरेंट है, राइट। सो उनका जो नेशनैलिटी है वो डिफरेंट है। So that's why they consider themselves to be a different ethnicity than us. Sir, आज in relevance to diversity, आजकल तो ये identity politics is becoming very fluid, ना? तो and since there are advancements in surgeries and all that, some people are actually changing their races because they identify, a black person identifies as a white person and a white person identifies as a black person. तो इनकी जो ये feelings है, is that valid? Like, does that impact diversity in it on itself, or can we just ignore these factors? नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, इसमें लेकिन आपने याद रखना, पॉलिटिक्स आपकी जितनी चल रही है ना, वो ज्यादातर आपकी जेंडर असाइनमेंट के बारे में, तो जेंडर बेस्ड आइडिया, राइट। तो लोग अपने जेंडर्स चेंज कर रहे हैं, वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को चेंज कर रहे हैं और वो अपने जेंडर रोल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। So that is the identity based politics, और ये बड़ा एक minuscule segment है, it's not a very big segment of society. आपका जो ज्यादातर पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो रेस बेस्ड पॉलिटिक्स है, और ये पूरी दुनिया में नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेस बेस्ड पॉलिटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सम ऑड रीजन। रेस बेस्ड पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा रोल प्ले किया था उसमें, अगर आपको याद है, साउथ अफ्रीका में ये नेल्सन मंडेला जिस टाइम पे बना था ना, ये 80s का दौर में आपको बता रहा हूँ, जब अपार्थाइड का टाइम चला हुआ था। So in that time the white Dutch were considering themselves to be an elite race and they were sort of dominating the black majority. वहाँ पे वो रेस बेस्ड पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत चलती है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे आप पाकिस्तान को अगर आप देखें ना, तो हमारे रेसेस इतने डिफरेंट नहीं है। Yes, sir. सर हम तो धूप में काले हो जाते हैं। हाँ, हम तो धूप में काले हो जाते हैं, और हमारे पास और क्या है, ये हमारे गोरे रंग के अलावा हमारे पास है ही क्या? हाँ सर। हाँ, हमारे पास इतनी डिफरेंट रेसेस नहीं है। पाकिस्तान के पास क्या है, एथनिसिटी की वैरायटी बहुत। मार्टिन लूथर किंग।
मार्टिन लूथर किंग तो ये अमेरिकन होता है ना, रेस बेस्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा नाम, right? So okay, so ethnicity is defined by us and race is based upon physical characteristics, right? अच्छा, अब इसमें ये देखा गया है that if you look around the world, some races, specifically in the US, tend to have lower education level and they get more menial या meager type की jobs उनको मिलती है. We find कि US में जो blacks हैं ये they tend to be lower educated and they tend to do more physical type of work as compared to people belonging to other races. अब इनके मुकाबले में Asians आए थे, and the US has a big Asian population, and the Asians tend to be more higher educated and they tend to do more professional type of job. ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप देखें, so certain ethnicities tend to have higher education as compared to certain other ethnicities. Certain groups that belong to a particular religion tend to have lower education as compared to groups that tend to belong to some other religions. For example, आप Christians को देखें, Hindus को देखें, Sikhs को देखें पाकिस्तान में, so higher educated, lower educated. So they're usually in the lower rung of the social ladder. ठीक है, आप कारोबार में देखें तो आपको ज्यादा सिख नजर आएंगे कि आपको क्रिश्चियन ज्यादा नजर आएंगे बिजनेसेस में. Sikh. Right? So there's different things happening with people in different places. So the Sikhs tend to do more businesses. जो आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी है, they tend to do more meager jobs, वो cleaning jobs और उस तरह की employment jobs को focus करते हैं. So ये government needs to sort of focus upon that and improve the situation. Right? So ये हमारे पास कहानी है. So I think we can stop it here, right? फिर बाकी कल करेंगे. Would that be all right? Yes, sir. आप लोगों ने अटेंडेंस प्लीज मार्क करनी है. सो गो टू योर गूगल क्लासरूम. Yes, sir. वहाँ पे क्लास वर्क के टैब में आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको मिलेगा अटेंडेंस का बटन. वो आपने प्लीज क्लिक कर लेना है. ये अहमद खान आफरीदी और आसिम खान आपने कुछ कमेंट्स किए हुए थे, तो सॉरी मैं ये उस गूगल में एक चीज एट द सेम टाइम देख सकता हूँ. I didn't get to see your comments till now. Yeah. Sir, it was just RV person. अगर आवाज टूट रही है तो I'm sorry, मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो आई थिंक मेरा बैंडविड्थ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया होगा. कोई बात नहीं सर, वो कमेंट का डिलीट करो. Okay. Okay, sir. Please make sure you mark your attendance then, right? Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. Can work last Kabala bhai ji. Okay, sir. Okay. Okay. Bye, sir. Thank you. आप यहाँ से exit कर जाएं.